Today we are going to start a very important chapter, Kingdom Animalia. Introduction. First of all, the word Animalia is derived from a Latin word anima, and anima means breathe or soul. So this is also an MCQs that Animalia is derived from Latin word anima meaning breathe or soul. According to two kingdom classification system, all the animals were referred to as मेटाजोआ एंड प्रोटोजोआ। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जितने भी एनिमल्स थे उनको मेटाजोआ और प्रोटोजोआ जो है वो कहा जाता था। बट इन केस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, मेटाजोआ वर रेफर्ड एज ट्रू एनिमल्स while protozoa were called as animal like protists. And in five kingdom classification system, metazoa were included in kingdom Animalia and protozoa were included in kingdom Protista. टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का ये डीमेरिट था कि इसने एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को भी किंगडम एनिमेलिया में प्लेस किया था, बट फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में मेटाजोआ दैट वर द ट्रू एनिमल्स उनको किंगडम एनिमेलिया में ही रहने दिया गया, जबकि ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल्स जो कि ट्रू एनिमल्स नहीं थे बल्कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट थे, उनको प्रोटोजोआ कंसिडर किया जाता था और उनको प्लेस किया गया किंगडम प्रोटिस्टा में। Now we will study the characteristics of true animals. The first characteristic is that they are multicellular. Multicellular are the organisms with many cells. The next characteristic is they are all eukaryotic. Eukaryotic means they have cells with true nucleus. Next character is diploid number of chromosomes. They have diploid number of chromosomes. It means that they have 2n number of chromosomes. Means chromosomes जो है वो इनमें पेयर की फॉर्म में मौजूद होंगे, homologous pairs की फॉर्म में। Next character is they are ingestive heterotrophs. As you know that heterotrophs are the organisms that cannot prepare their own food and depend upon autotrophs for their food and energy requirements. Last character is they are heterogametic. Hetero means different, gametic is for gametes. Gametes are the germ cells. It means that they produce two different kinds of gametes, which are egg and sperms. These two gametes are relatively different from each other. Eggs are large and non-motile, means they are unable to move, while sperms are small and motile. Any organism possessing these characteristics is referred as animal. It must be multicellular, eukaryotic, having diploid number of chromosomes, ingestive heterotroph, and heterogametic. For the basis of development of complexity, animals can be categorized into different classes on the basis of different characteristics. अब हम एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे डिफरेंट बेसिस के ऊपर, और वो बेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज के बेस पे हम एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे वेदर टिश्यूज प्रेजेंट हैं या नहीं प्रेजेंट, और अगर प्रेजेंट हैं तो उनकी अरेंजमेंट किस तरह है। ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी की बेस पे भी एनिमल्स को जो है वो थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वेदर उनके पास बॉडी कैविटी है, नहीं है, या फिर फॉल्स बॉडी कैविटी है। ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री किस तरह की एनिमल्स की, इसकी बेस पे भी एनिमल्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ लेयर ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी में जो लेयर्स मौजूद हैं उनको किस तरह ऑर्गेनाइज किया गया है, इस बेस पे भी एनिमल्स की दो टाइप्स हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज टाइप इन एम्ब्रियोज, एम्ब्रियो स्टेज पे सेल्स की क्लीवेज किस तरह की होती है, इस बेस पे भी एनिमल्स को जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दीज कैटेगरीज वन बाय वन। ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू टाइप्स, animals are categorized into two groups, parazoa and eumetazoa. Parazoa include the simple animals, while eumetazoa consist of complex animals. Basically, U is for true and metazoa
is term used for animals. Basically, eumetazoa are the true animals, while parazoa include the simplest animals on the earth. Parazoa include those animals that don't have tissue organization. इनमें cells मौजूद होते हैं but they are not present in group form, not present in tissue form. So no tissue organization is present in parazoa. While cells are arranged in the form of tissues, organs, and organ systems in case of eumetazoa. Parazoa are asymmetrical. When they don't have a tissue organization, only cells are present in the body, then how does this category can have a symmetry? So they are asymmetrical. While the organisms included in eumetazoa have symmetry, and that symmetry may be radial or may be bilateral. We will discuss it later. पैराजोआ में इंक्लूडेड है phylum Porifera. That is the simplest phylum of kingdom Animalia. और eumetazoa में almost 29 phyla जो है वो included है. From phylum Cnidaria to phylum Chordata. So this was the classification on the basis of tissues. Parazoa and eumetazoa, organisms with no tissue organization and simple multicellular organization are parazoa, and animals with complex multicellular organization having tissue as well as organ and organ system organization are included in eumetazoa. Now we will discuss the classification of animals on the basis of tissue layers. On the basis of tissue layers, number of tissue layers, there are two kinds of animals. They are diploblastic and triploblastic. Diplo means two, and blastic is derived from a word meaning sprout. You can also say that blast means layer to memorize it. Triplo means three and blast for layer. It means that animals with two body layers or two tissue layers are called diploblastic, while animals with three body layers or three tissue layers are called triploblastic animals. In case of diploblastic, the two layers are endoderm and ectoderm. Endoderm is the inner layer, while ectoderm is the outer body layer. And between these two layers, endoderm and ectoderm, there is a jelly-like mesenchyme or mesoglea present. While in case of triploblastic organisms, the three layers are ectoderm, endoderm, and the third one is mesoderm. Ectoderm is the outer layer, mesoderm is the middle layer, and endoderm is the inner layer present in these organisms. But the difference is that in case of diploblastic organisms, there is a jelly-like mesoglea between endoderm and ectoderm. While in triploblastic organisms, there is a true body layer called mesoderm between endoderm and ectoderm. The organisms with diploblastic organization show low degree of organization. It means that they don't have a well-developed organ systems including circulatory system, nervous system, digestive system, etc. They have these systems but are not well developed like the organisms in triploblastic organization. In triploblastic organization, there is a high degree of organization. It means that they have well developed organ and organ systems. बेसिकली बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इन्हीं लेयर्स से आगे बनते हैं बिकॉज डिप्लोप्लास्टिक में जस्ट टू लेयर्स प्रेजेंट हैं तो वो स्ट्रक्चर्स बनेंगे जो इन दो लेयर्स से बनते हैं endoderm and ectoderm से. While in case of triploblastic, a third layer is also present, that is mesoderm, and many of the body organs are basically formed from this layer. Therefore, triploblastic organisms have well developed organs and organ systems.
They don't have special transport system, neither they have a well-developed nervous system. या तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में बिल्कुल नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है और अगर होगा भी तो कुछ नर्व नेटवर्क होगा, प्रॉपर नर्वस सिस्टम इनमें एब्सेंट होगा. The body cavity in case of diploblastic organization is called gastrovascular cavity, and it acts as body cavity as well as digestive cavity. While in case of triploblastic organization, there are many organ systems present, and they're formed from these three germ layers. The first layer is ectoderm. Ectoderm forms nervous system and integumentary system. Integumentary system is basically the system that protects the body by acting as body covering. जैसा कि हमारी बॉडी में स्किन मौजूद है, that is our integumentary system that act as protective layer of our body. So these two systems are developed from ectoderm. Next layer is mesoderm. So mesoderm is responsible for the formation of many important organ systems, which include muscular system, skeletal system, even reproductive system, etc. And the innermost layer is endoderm, which is responsible for the formation of digestive system and also responsible for the formation of glands. Glands की formation भी endoderm का जो है function है. So this is very important for MCQs कि कौन सा system किस layer से develop होता है. So memorize all these systems with their germ layers. And remember one thing, that both these kind of organisms belong to the group Eumetazoa. दोनों जो है वो Eumetazoa से belong करते हैं. It means that Porifera, the phylum Porifera is not included in this system, as we have already discussed that the phylum Porifera is included in asymmetrical organisms, and इन दोनों layers में symmetry है. That is why they are not included in the group of Parazoa. They both belong to Eumetazoa. Phylum Porifera is included in Parazoa और Eumetazoa में बाकी 29 phyla जो है वो involve है. इन 29 में से भी those with diploblastic organization are Cnidarians. So phylum Cnidaria have diploblastic organization and all other phylums have triploblastic organizations. From platyhelminthes to chordates, all the animals are triploblastic. Now we will classify animals on the basis of their symmetry. So on the basis of symmetry, there are two kinds of animals, radial symmetry and bilateral symmetry. So on the basis of their systems, there are two grades in animals. The organisms with radial symmetry are included in grade Radiata, and the organisms with bilateral symmetry are included in grade Bilatria. Grade Radiata. In case of grade Radiata, the body parts are arranged around the central axis in such a way that each plane passing through central axis divides body into two halves. ग्रेड रेडिएटा में ऑर्गन्स इन अदर स्ट्रक्चर्स बॉडी में इस तरह अरेंज होते हैं कि कोई भी लाइन, कोई भी प्लेन जो सेंट्रल एक्सिस से पास करे वो बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे. सपोज यू हैव अ स्फीयर. इफ यू विल डिवाइड दिस स्फीयर, तो ये स्फीयर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और ये दोनों पार्ट्स बिल्कुल सेम होंगे, एग्जैक्ट होंगे, एंड दीज आर कॉल्ड मिरर इमेजेस. नाउ अगर आप इस स्फीयर को इस प्लेन में डिवाइड करते हो, अब भी ये प्लेन सेंट्रल एक्सिस से पास कर रहा है और अब भी दो इक्वल पार्ट्स में ये स्फीयर डिवाइड हो गया है. इट मींस दैट इट हैव रेडियल सिमेट्री. नाउ इफ यू डिवाइड दिस स्फीयर थ्रू दिस प्लेन, अब भी ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. इफ यू डिवाइड इट इन दिस प्लेन,
then it would also be divided into equal halves. So this type of symmetry is called radial symmetry. And the organisms with this kind of symmetry are included in great radiata. जब इनको सेंट्रल एक्सिस से किसी भी प्लेन के थ्रू कट किया जाता है तो जो पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं. मिरर इमेजेस का मतलब होता है बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे होते हैं. रेडियल सिमेट्री में जो बॉडी प्लेन्स होते हैं वो इंटरनली एक्सटर्नली सिमेट्री जो है वो सेम शो करते हैं. रेडियल सिमेट्री इनकी होती है. एंड दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इट इज एन अडेप्टेशन फॉर सिसाइल लाइफ. सिसाइल मोड ऑफ लाइफ के लिए ये अडेप्टेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है. मीन्स द ऑर्गेनिजम्स विद रेडियल सिमेट्री आर मोस्टली सिसाइल. दिस इज a cnidarian and this is the top view of its body and you can see that अगर हम इसको दिस इज द सेंट्रल एक्सिस, इस प्लेन में इसको डिवाइड करेंगे ये दो इक्वल हाफ्स होंगे. इस प्लेन में डिवाइड करेंगे ये दो इक्वल हाफ्स होंगे. इस प्लेन में डिवाइड करेंगे ये दो इक्वल हाफ्स होंगे. और अगर इस प्लेन में डिवाइड करेंगे तो अपर एंड लोअर हाफ्स जो हैं वो होंगे. सो आपने ऑब्जर्व किया कि हम किसी भी प्लेन में अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो दो इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं. मिरर इमेजेस जो हैं वो उनकी फॉर्मेशन हो रही है. इट मीन्स दैट इट हैज रेडियल सिमेट्री. सो द ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड इन phylum Cnidaria have this kind of symmetry, that is radial symmetry, means they are included in grade radiata. Phylum Cnidaria, or it is also called phylum Coelenterata. The organisms with bilateral symmetry are included in grade Bilateria. In grade Bilateria, the animals can be divided into equal halves by an imaginary line only in one plane. एक लाइन, एक इमेजिनरी लाइन सिर्फ एक ही प्लेन से अगर पास करेगी तो एनिमल दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा. सपोज यू हैव अ रेक्टेंगल इन दिस शेप. अब ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कैसे हो सकता है? अगर आप इसको एंड देयर आर टू स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन दिस साइड. अगर आप इसको इस प्लेन पर कट करोगे तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, लेफ्ट एंड राइट. अगर आप इसको इस प्लेन में डिवाइड करोगे तो ये दो इक्वल पार्ट्स नहीं है, बिकॉज दीज टू स्ट्रक्चर्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन दिस साइड. सो दीज आर नॉट इक्वल पार्ट्स. It can be divided into mirror images or can be divided into equal halves only by cutting it into this plane. So the organisms with this kind of symmetry are included in grade Bilateria. They have same right and left sides. इनकी right and left sides तो same होती है, but they don't have same upper and lower side. Lower and upper side इनकी different होती है. There is clearly head and tail end. Head वाला end जो है वो anterior side पे होगा and tail end is present on the posterior side of the body. Also they have distinct ventral and dorsal sides. अगर हम observe करें ह्यूमन बॉडी को, हमारी फेस वाली साइड जो है ये वेंट्रल साइड है and the side with backbone with the vertebral column is dorsal side. जैसे ग्रेड रेडिएटा adaptation है for sessile life, grade Bilateria with bilateral symmetry is an adaptation for motile life. Means the organisms with bilateral symmetry can move. Just look at this figure. This is an animal with bilateral symmetry. You can see that यहाँ पे दो planes हैं. एक ये plane है और एक ये plane है. This is a horizontal plane and this is a vertical plane. And another plane, transverse plane. Femoral plane, median plane and transverse plane. This is the anterior side of the body. This is the posterior side. Head side anterior side है and tail side is the posterior side. This is the dorsal side. And this is the ventral side of the body. So अगर बॉडी को इस प्लेन में डिवाइड किया जाए, you can observe that
दो इक्वल हाफ्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। इस हाफ में टेल है जबकि इस हाफ में हेड है, सो दीज आर नॉट द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। अगर बॉडी को फिमोरल प्लेन में डिवाइड किया जाए, फिमोरल प्लेन में मींस बॉडी को सेंटर से यूं कट कर दिया जाए, तो भी दो इक्वल हाफ्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। नीचे वाले साइड पे लेग्स एंड फुट है जबकि ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे ईयर्स है एंड देन अदर बॉडी ऑर्गन्स, सो ये भी इक्वल हाफ्स नहीं है। बट इफ द बॉडी इज डिवाइडेड थ्रू मीडियन प्लेन तो बॉडी के इक्वल हाफ्स होंगे। दोनों साइड्स पे टेल का कुछ पार्ट होगा, दोनों साइड्स पे लेग्स होंगी, दोनों साइड्स पे ईयर्स होंगे, दोनों साइड्स पे नोज का कुछ पार्ट होगा, आईज होगी एंड ऑल अदर स्ट्रक्चर्स। सो मीडियन प्लेन पे अगर बॉडी को डिवाइड किया जाए तो इक्वल हाफ्स प्रोड्यूस होंगे और किसी प्लेन में भी इक्वल हाफ्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे। दिस काइंड ऑफ सिमेट्री इज बायलेटरल सिमेट्री एंड दिस इज प्रेजेंट in all phylums except Cnidaria. From platyhelminthes to chordates, all organisms possess this kind of symmetry. But there is an exception. In case of phylum Echinodermata, Echinodermata में larval stage में bilateral symmetry ही present होती है. But in case of adult, they have radial symmetry. Classification of animals on the basis of body cavity. So on the basis of body cavity there are three types of animals. The first type is acoelomates. A means not, coelom mean cavity. Acoelomates are the organisms that are without a body cavity, means they don't have a body cavity. इनमें body cavity होती नहीं है। बेसिकली मीजोडर्म जो कि एंडोडर्म और एक्टोडर्म के दरमियान लेयर है, इनमें सेलुलर टिश्यू की एक लेयर की फॉर्मेशन करती है एंड दैट लेयर इज कॉल्ड मेसेनकाइम और पेरेनकाइमा एंड दिस मेसेनकाइम और पेरेनकाइमा forms packing around the internal organs to support and protect them. Moreover, they don't have a special transport system, they don't have a well developed nervous system. However, they have a well developed excretory system and excretory system of these animals consist of specialized cells called flame cells. इनको हम आगे फाइलम में डिस्कस करेंगे. So this is the organization in case of acoelomates. The outer layer is ectoderm, inner layer is, this is the inner layer named as endoderm and the middle layer is mesoderm. और mesoderm में you can see that there are cells and these cells form a layer called parenchyma or mesenchyme. So there is no body cavity present here. This is the digestive cavity, not a body cavity. Example, organisms of phylum Platyhelminthes that are commonly called as flatworms. They are acoelomates. The next category is pseudocoelomates. Pseudo means false. Coelom means cavity. It means that these animals have false body cavity. इनकी जो body cavity होती है that is false body cavity. And this body cavity is not developed from mesoderm. However, वैसे जो body cavity है true coelomates में उनमें body cavity mesoderm से derive होती है, लेकिन इनमें mesoderm से derive नहीं होती और ना ही यहाँ पे coelomic epithelium मौजूद होता है, बल्कि यहाँ पे जो cavity होती है वहाँ पे proteinaceous fluid मौजूद होता है, जिसकी वजह से ना वो proper cavity है ना ही proper occupied region है. That is why it is called pseudocoelom. This is ectoderm, this is mesoderm and this orange colored layer is endoderm. And you can see that between endoderm and mesoderm there is a fluid filled cavity. This is called pseudocoelom. और ये जो white matter आपको नजर आ रहा है this is proteinaceous fluid. The organisms of phylum Nematoda have pseudocoelom. Therefore they are called pseudocoelomates. The last category is coelomates. Coelomates are the organisms that have a true body cavity. And this body cavity is present between body wall and alimentary canal. Alimentary canal means digestive system or it may be called as gut. In case of coelomates, the body cavity or coelom is derived from middle layer called mesoderm. It has mesodermal origin.
In case of coelomates, mesoderm is split into two layers, outer and inner mesoderm. Outer mesoderm is called parietal layer, while inner mesoderm is called visceral layer. Parietal layer of mesoderm lines body wall, while visceral layer of mesoderm line internal specific organs. सिलोमेट्स में सिलोम जो है उसमें एक फ्लूइड होता है, सिलोमिक फ्लूइड. Coelomates consist of higher animals, therefore they have well-developed digestive, excretory, circulatory, respiratory, reproductive and neurosensory systems. Neurosensory system means nervous system. In case of coelomates, this is ectoderm, outermost layer, this is endoderm, innermost layer, and this pink colored layer is mesoderm. And you can see that mesoderm से के आगे एक white colored cavity है. This cavity is called coelom, and this coelom consists of coelomic fluid. They are called coelomates. All the phylums from annelids to chordates are coelomates. And at the end, we will discuss about the categories of animals on the basis of cleavage type. So there are two kinds of cleavage of cells at the embryonic stages. At the embryonic stages, the cleavage of cells may be radial or spiral. If the cleavage type is radial, the organisms are called deuterostomes. If the cleavage is spiral, the organisms are called protostomes. Here are the characteristics of protostomes and deuterostomes. The first characteristic is cleavage. As you know that these are the classification on the basis of cleavage type of cells during the embryonic stages. So there are two types, spiral cleavage and radial cleavage. As you can see that this is an 8-cell stage of embryo. The 4 cells are present on the lower surface while the 4 cells are present on the upper surface, and the cells that are present on the upper surface are basically formed by mitosis of these cells that are present on the underlying surface. और आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नया सेल बना है pre-existing cell से, that is present between the two cells. This type of cleavage is called spiral and determinate cleavage. While in case of radial cleavage, यहाँ पे भी 4 सेल्स जो हैं वो नीचे मौजूद हैं और 4 सेल्स इन्हीं सेल्स के ऊपर ओवरलैप किए हुए हैं. और ये सेल्स, न्यू बनने वाले सेल्स इस तरह अरेंज है कि हर सेल पिछले सेल के बिल्कुल टॉप पे मौजूद है. ऐसा नहीं है कि एक सेल 2 सेल्स के दरमियान में मौजूद है, बल्कि एक पूरा सेल दूसरे पूरे सेल्स के ऊपर मौजूद है. दिस टाइप ऑफ cleavage is called indeterminate or radial cleavage. The second difference is fate of blastopore. Blastopore is the opening of blastomer. Blastomer basically embryo को कहा जाता है. Blastomer ऐसा embryo होता है जिसमें 2 germ layers बन चुकी होती हैं और एक बन रही होती है, और जैसे ही 3 layers बन जाती हैं blastomer change हो जाता है gastrula में. And the opening of blastomer is called blastopore. Now there are two possibilities. एक possibility ये है कि जो opening है वो उससे बने mouth, और अगर blastopore से बन रही है opening और उसकी opposite side से बन रही है anus, then this is protostomes. और अगर blastopore से बन रहा है anus और blastopore के opposite side पे जो opening है वो develop हो रही है future mouth में, so this is deuterostome. Next is the coelom formation. In this figure, the outermost layer is ectoderm, and these yellow colored cells are of endoderm, and these red regions showing the future mesoderm. This cavity is gut. In case of protostomes, coelom is formed by the splitting of mesoderm. mesoderm की splitting से बनती है. mesoderm split हो जाती है 2 layers में.
parietal layer and visceral layer. You can also say somatic layer or subplanchnic layer. और इन दोनों लेयर्स के दरमियान जो कैविटी डेवलप होती है, दैट कैविटी इज कॉल्ड शिजोसिलोम. While in case of deuterostome, coelom formed by an outpocketing of primitive gut. Primitive gut की outpouching से बनती है. This is the primitive gut और ये mesoderm है, mesodermal cells हैं. अब जैसे mesodermal cells outpouching होगी उनकी, उस वहां पे जो cavity develop होगी, that cavity will be future coelom. Now let's differentiate protostomes and deuterostomes. The first difference is cleavage. You know that in case of protostomes, the cleavage is of spiral type and determinate. Determinate means फ्यूचर में किस सेल ने कौन सा ऑर्गन बनाना है, किस सेल ने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, ये डिटर्मिनेट होता है. While in case of deuterostome, cleavage is radial and indeterminate. रेडियल तो हमने देख ली, इनडिटर्मिनेट का मतलब है कि हर सेल की जो फेट है वो डिसाइड नहीं होती है. इन दीज एनिमल्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट ब्लास्टोपोर डेवलप्स इनटू माउथ फ्रॉम इट्स इंटीरियर मार्जिन्स, while in case of deuterostomes blastopore forms future anus. और माउथ जो है वो कुछ फासले पे बनता है ब्लास्टोपोर के. Mouth is developed at some distance interior to the blastopore. Next structure is coelom. In case of protostome, coelom is schizocoelom or schizocellus. Schizocellus coelom is formed by the splitting of mesoderm, while in case of deuterostome, coelom is enterocellus. Enterocellus coelom is formed by the outpouching of gut or primitive gut, can also be called as archenterone. In case of protostome, mesoderm is formed derived from the cells of interior lip of blastopore. Interior lip of blastopore से बनती है, जबकि deuterostome में mesoderm is derived from cell wall of developing gut. ये developing gut है, इनके सेल से मेसोडर्म की फॉर्मेशन होती है, जबकि यहाँ पे एंडोडर्म और एक्टोडर्म जहाँ पे मिल रहे होते हैं, जहाँ पे जंक्शन होता है एंडोडर्म और एक्टोडर्म का, वहां से मेसोडर्म की फॉर्मेशन होती है. The organisms that are included in phylum Aschelanthes, Annelida, Mollusca and Arthropoda are protostomes, while in case of organisms of phylum Echinodermata, Hemichordata and Chordata are included in series Deuterostome and are also called deuterostomes. Now here is the classification of kingdom Animalia or the animals on the basis of different issues. The first basis, presence or absence of tissues. So on the basis of presence or absence of tissues, there are two categories of animals. If the tissues are absent, then they are parazoa, and phylum Porifera is included in parazoa. If the tissues are present, then they are called eumetazoa, and all the phyla except phylum Porifera are eumetazoans. Now on the basis of tissue layers, there are two categories of animals. Some are diploblastic and some are triploblastic. If there are two germ layers, then they are diploblastic, which are endoderm and ectoderm. If they have three germ layers, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, देन दे आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक में शामिल है नाइडेरियंस, फाइलम नाइडेरिया, एंड ऑल अदर फाइलम एक्सेप्ट नाइडेरिया एंड पोरिफेरा आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. And now on the basis of body symmetry, there are two categories of animals. Some have radial symmetry and some have bilateral symmetry, while some are asymmetrical. और asymmetrical में आते हैं poriferans. Radial symmetry is of cnidarians and adults of echinoderms. Echinoderms में जो adults आते हैं उनकी भी symmetry radial होती है, and all other phyla have bilateral symmetry. On the basis of body cavity, there are three categories of animals. Some are acoelomates that don't have a body cavity. Some have pseudocoelomates that have a false body cavity, and some are coelomates that have a body cavity. Acoelomates में शामिल हैं
platyhelminthes that are also called flatworms. Pseudocoelomates में शामिल हैं nematodes that are also called roundworms. और coelomates आगे दो तरह के होते हैं, protostomes and deuterostomes that have a schizocellus are called protostomes and that have a enterocellus are called deuterostomes. So this was the classification of animals on different bases.